again, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this time I'm back with a DIY video. Like I'm gonna be doing my entire face makeup using DIY products. Like I'm gonna be making all these products at home by myself. So I created this look. I know this is not a glamorous look and all, but I tried to make all these products by myself and I created and I'm very happy how it turned out. And चलो फिर start करते हैं. ओके तो लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टार्टिंग विद माई मॉइस्चराइज़र जो मैं अपना डेली यूज़ करती हूँ, तो उसमें तो आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज इट्स सजेस्टेड बाय माई डॉक्टर. To moisturize my lips, I'm using some coconut oil, nothing fancy. सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो. आई डोंट नो, मुझे बहुत मज़े आने वाले हैं ऐसे करने में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक एक प्रोडक्ट मैं दिखाती जाऊंगी कैसे कैसे मैंने बनाया. सो प्लीज़ डोंट स्किप टू द एंड कि शायद एंड में डाला हो. नहीं, मैं हर एक प्रोडक्ट को एक साथ दिखाती जाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द बीबी क्रीम. For the BB cream, I took some aloe vera gel in a bowl. I mixed it with my moisturizer, some cocoa powder, and also a very little quantity of some talcum powder to make it look more like a BB cream, and continue mixing it till it becomes up to your shade. ये मेरे पास इस बाउल में मेरी बीबी क्रीम है जो मैंने बनाई थी. ऑल्दो इट लुक्स लाइक मुल्तानी मिट्टी अभी. आई डोंट नो ये काम करेगी या नहीं, बट चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं. Just gonna dot it all over. Let's hope for the best. मिरर ले लेती हूँ. ये ब्रश या ब्लेंडर से तो मुझे नहीं लगता ब्लेंड होगी, तो आई एम जस्ट गोना यूज माई हैंड्स. But okay, I can see a little difference. I did not make any compact powder because मेरी skin already dry है. I don't use compact powders or loose powders. So just this for the base. And let's now move to the eyebrows, which is my favorite part. For the eyebrow gel, I completely burnt off a few almonds, crushed them really nicely and mixed them with some coconut oil. It is really important that you crush the almonds really well so that there is no grains in it. Otherwise, it will be a grainy texture and we don't want that. तो मैंने वो आईब्रो जेल स्लैश केक या whatever टाइप चीज़ तो बना ली थी, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी थिंग टू स्टोर इट इन. तो इसको अपने पुराने लंच बॉक्स में स्टोर करके फ्रीज़ कर दिया. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड मैंने इसको थर्ड टाइम बनाया है. लाइक जो 2 बारी मैंने इससे पहले बनाया वो मेरे से बिगड़ गया जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट क्रश द मिक्सचर वेल. इस बारी मैंने इसको बहुत अच्छे से क्रश किया, लाइक वेरी फाइनली. एक भी उसमें लंप नहीं रहना चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं बनेगा. लाइक इट विल बी सो ग्रेनी एंड वी डोंट वांट ग्रेनी टेक्सचर. तो ब्रश फिल करना स्टार्ट करते हैं. तो बहुत टाइनी अमाउंट. This is actually not bad. Like, see the difference. The eyebrows look pretty well. Like, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है because shape थोड़ी सी different है दोनों की. But okay, I'm happy with the things I am doing. Now let's quickly move on to the eyeshadow. And for the eyeshadow, I took some beetroot juice, mixed it with some aloe vera gel and also a very little quantity of cornflour powder, and I kept mixing it till it became up to my liking. You can see it is such a beautiful fuchsia color. Simply going in with my finger. Try करते हैं, कुछ होता है तो. Considering I made these things at home, I think it's okay. Like, it's nice.
लेट्स क्विकली जंप बैक टू द आईज। तो मेरे को वही आईलाइनर का ट्राई करना है। वो वापस से अपना वही ये है, वैसे मैंने इस पर था ऑलरेडी बट मैं फिर भी थोड़ा सा इस पर ले रही हूँ वापस से। इससे एक विंग बनाने का ट्राई करते हैं। आई वांट दिस टू बी अ मैस, मैं छोटा ब्रश से करती हूँ। It's fine. I mean, fine. For the blush, I had this, which looks like fruit jam, but yeah. ओह, कितना प्यारा लग रहा है। The blush did a pretty nice job. Like कैमरे पे शायद इतना पता ना चल रहा हो, but in real this is okay. And for the lipstick, I'm gonna use the same thing that I used as eyeshadow. This is working for me at least. So that's it guys, this is done. मुझे तो अच्छा लग रहा है. Please tell me in the comments down below if you like this video and my efforts, and please share it with your family and friends and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Till then, bye bye.